Hello guys, welcome to Plutus IS. This is AKSHAY GURUBHAIYE, faculty geography. So, in continuation with our geography answer writing series, I am here now with again a new question. That question which was asked in 2022 mains. It was about the basics of physiography of India, and again how you connect it with the current affair. That really helps you to fetch good marks over in this question. You will find कि जो theoretical knowledge है आपका current affair कैसे integrate करना है, so that will help you to gain higher marks. So without wasting lots of your time, so मैं start करता हूँ this question. As you know, हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन वन सिंगल वीडियो, तो आपको वो चीज़ ईजी भी रहेगी. यू कैन असिमुलेट दैट अंडरस्टैंडिंग्स एंड अल्टीमेटली यू कैन अप्लाई इट से व्हाइल आंसर राइटिंग एज वेल. ओके, सो यूपीएससी 2022 मेंस GS1 क्वेश्चन. Discuss the natural resource potential of Deccan Trap. It was asked for 10 marks. It was asked for 10 marks and 150 words. You have to answer it 150 words. As you know, कि plus minus 10% margin is absolutely there. However, you are not supposed to breach this limit at any instance. क्योंकि देखो भले यूपीएससी ने अगर नहीं भी बोला है राइट से ऑन द हायर काउंट, बट द थिंग इज कि अगर 160-165 वर्ड्स लिखोगे, इट मीन्स यू आर गोइंग टू कंपनसेट दिस पर्टिकुलर एडिशनल वर्ड्स से फॉर एनी अदर needed question then, and that's why you have to keep this thing ensure that you are trying to answer this question within the on the lower margins of the word limit given. Okay, so without wasting lots of time, see question है जो डिमांड है उसका. फिर से रिपीटिंग द क्वेश्चन, डिस्कस द नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप. देखो की एरिया है यहां पर डेक्कन ट्रैप. द क्वेश्चन रिवॉल्व्स अराउंड डेक्कन ट्रैप. देन it is asking for which resources, isn't it? It's about resources, but those resources are natural resources. Okay, those resources are natural resources. That is a key term or word. So you are not supposed to miss the key area and key term as well. पता चले अगर आपने artificial resources लिख दी है या इन एडिशन, इवैल्यूएटर विल गेट टू नो कि आपने क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं है और यू जस्ट फेल टू हाईलाइट द की टर्म देयर, एंड अल्टीमेटली यू हैव टू पे द प्राइस फॉर. क्योंकि ज्योग्राफी में तो प्रिंसिपल है ही न्यू डिटर्मिनिज्म, दैट एवरी डिसीजन मैन टेक्स ही हैज टू पे द प्राइस फॉर. ओके, सो देखो अब यहां पर सिंपल है. द टॉपिक इज इंडियन ज्योग्राफी, area is Deccan Trap. Question is pretty much theory based, right? Theory based कि आप इसका आंसर आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, इसका आंसर आपको NCERTs में भी मिल जाएगा. ठीक है, that is given in as in. And what you are supposed to, देखो जब क्वेश्चन पूछ रहा है this key question term is discuss, you have to write about Deccan Trap, right? But not about कि what Deccan Trap is. देखो introduction, देखो I told you in the earlier class sessions as well that क्वेश्चन itself provide you how to approach it, provided आपके पास वो व्यू होना चाहिए कि उसको रीड कैसे करना है या उस एंड तक जाना कैसे है. अब इस क्वेश्चन में इफ यू सी यू विल फाइंड the question itself what giving you the way, right? Okay, or it is what indicating for introduction. कैसे introduction चाहिए? Don't write it like a Deccan Trap include this states, Maharashtra, Karnataka, Gujarat part, Madhya Pradesh and that part. Absolutely not. अभी इस question में ये need नहीं है. Question is asking you for natural resource potential. देखो question है specifically geography, ठीक? Indian geography अगर उसमें भी अगर head अगर divide करें हम, so you are not supposed to start it with like a political explanation or political introduction that way. No, that doesn't make a sense.
try to start it with some geographical introduction, okay, and try to connect there itself how this Deccan trap got enriched with the natural resources. देखो अगर मैंने, क्योंकि मेन बॉडी में मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं इंट्रोडक्शन में ही अगर उसको कनेक्ट कर दूं, डोंट यू थिंक दैट इज एब्सोल्युटली व्हाट एग्जामिनर वांट्स और इवैल्यूएटर इट वांट्स, राइट? सो द इंट्रोडक्शन मस्ट बी लाइक वेयर डेक्कन ट्रैप and this natural resources finds interconnection. Yes, find interconnection. तो यहाँ पर ये चीज़ कनेक्ट हो. Watch the video till the end guys, because इस आंसर में, इस डिस्कशन में you will find at the end model answer as well. ठीक है, that is written by me and you will get to know कि आंसर राइट कैसे करना है. एक स्टैंडर्ड मॉडल आंसर स्ट्रक्चर भी आपको मिल जाएगा, बट बिफोर दैट आई एम जस्ट डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. ओके, सो इंट्रोडक्शन दिस वे. देखो अगर इस वे से कनेक्ट करोगे तो एग्जामिनर विल फील प्रीटी मच टारगेटेड. द रीजन बीइंग आपने दो एरिया ही है क्वेश्चन में, एक डेक्कन ट्रैप और नेचुरल रिसोर्सेज, और आपने इंट्रोडक्शन में डायरेक्टली हिट किया है क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट है नहीं, राइट? सॉरी, वर्ड लिमिटेशंस है एंड व्हाट यू हैव टू स्टिक टू दैट पर्टिकुलर एंड. सो इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी व्हाट इट देन इट शुड इंक्लूड. इट शुड इंक्लूड से अगेन, देखो अब यहां पे डोंट राइट अबाउट डेक्कन ट्रैप फर्दर, क्योंकि डेक्कन ट्रैप क्या है आपने पहले बता दिया इसको. ओवर हियर you can write those dimensions of natural resources, and believe me guys, as many resources you will be writing over here, okay, उतना ज़्यादा impression carry करेगा. Natural resources as like say natural resources in the sense you will find those mineral resources. You may write it like say further say what forest resources. You may write it as like river water resources या water resources. Naturally है ना, exactly. Yes, dimension. See what I have gone through many answers and I have seen कि एक ही dimensions पे आंसर लिखे हैं mineral. It's about like having a rich iron content, having a manganese content, having a cobalt content, having a mica content. But the question is asking you for natural resource based potential. Okay, so make yourself diverse, okay, try to be multidimensional. So forest, mineral, forest, river, then you will find energy resources. You may write it as like soil or agriculture resources as well. Soil or agriculture resources as well. And this resources, okay, dimensions देखो, then will absolutely help you, okay. और भी वैसे rock resources भी लिख सकते हो उसमें. So as many dimensions as you can add further, okay. This helps examiner again to understand to the depth of your knowledge, okay. तो ये लिखा हमने again attached with example everywhere. I am telling you example हर जगह आपको attach करने हैं. That again shows your what consistency of your knowledge as well, ठीक है. So and at the end conclusion, देखो question is what about Deccan trap, its resources, and yes, now as you know India is what we consider ourselves like say having those resources, but we just fail to tap those resources, identify and ultimately say exploit those resources. So your conclusion must be, what I feel personally, it should be like how those listed, right, how those listed resources just could be utilized further, or else अगर solution उस way में ना हो तो at least इस resource के exploitations में problems क्या है ये भी लिख सकते हो. देखो मल्टीपल कंक्लूजन आई एम जस्ट ट्राइंग फॉर, राइट. प्रॉब्लम्स लिख सकते हो, सॉल्यूशंस लिख सकते हो, या प्रेजेंट स्टेटस लिख सकते हो. इट्स अप टू यू. प्रेजेंट स्टेटस ऑफ दिस resource exploitation. It's up to you how you finally conclude it, what way, okay, what way you feel that is really appropriate to, right. तो
See now model, I think I have given you enough fodder actually how to approach this question for. देखो हर किसी का अगेन विद द डिस्क्लेमर आंसर डिफरेंट होगा, ओके, बट आई एम जस्ट हियर टू हेल्प यू कि आपको किस लाइन पर सोचना है, ओके, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग इट्स नॉट लाइक से इट्स एन आर्ट, इट्स नॉट मेयरली आंसर राइटिंग, इट्स एन आर्ट इन इटसेल्फ, ओके. सो देखते हैं अभी मॉडल आंसर. देखो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन सिंपली आस्क यू फॉर मिनरल रिसोर्स बेस ऑफ डेक्कन ट्रैप एंड कैंडिडेट्स अवेयरनेस, ठीक है, जो मेजॉरिटी एरिया जो फोकस है वो मिनरल रिसोर्सेस है, ओके. हाउएवर अलोंग विद द मिनरल रिसोर्सेस यू हैव टू ऐड अदर डिमेंशंस फर्दर. अगर सिर्फ मिनरल लिखोगे तो बिलीव मी यू वोंट बी गेटिंग इनफ मार्क्स. देन नेचर ऑफ क्वेश्चन theoretical है, absolutely easy to moderate level है, you will find this content even in the NCERTs and other reference books. So theoretical Indian geography based. Structure, what should be your structure? I told you, start with the Deccan Trap, its formation and how this formation actually led to this resources available, right? जब ये लिखोगे तो immediate evaluator, right? Evaluator just able to understand your that clarity, right? Then discuss various resources of the region, draw map showing location. Now geography है, map, there must be a map, क्योंकि geography is about space, geography is about location, so you have to write it. Then conclude accordingly. See answer now, introduction. Now what again guys, मैंने देखा है कि बहुत बार हम introduction conclusion करते हैं तो वहाँ लिखते हैं कि introduction है, वहाँ पर conclusion है. You are not supposed to. Your answer should be structured in such a way कि उस आंसर में इंट्रोडक्शन कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, ये आपको लिखना ना पड़े. That your answer should have that much segregation as in, okay, that parts are clearly demarcated, visible, okay. That is a skill I am telling you again. वो आर्ट है, वो आप प्रैक्टिस के साथ आ जाएगी, okay. So Deccan Trap is a geological region which is a part of the peninsular India. It is result of the large scale basaltic eruption during Cretaceous period. देखो कुछ टर्म्स हमने यूज किए जिससे आपकी कंसेप्ट भी या एक अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस टॉपिक इज विजिबल. या ऐसा ही आई एम टेलिंग यू कि आंसर राइटिंग इज नॉट मेयरली आंसर राइटिंग, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर स्किल्स, योर वैल्यूज, योर डेप्थ एंड योर कंसेप्ट ऑफ क्लैरिटी एज वेल. सो देखो यहाँ से पता चला कि इवेल्युएटर इज नाउ अवेयर अबाउट, या यू आर हैविंग दैट आइडिया कि ये डेक्कन ट्रैप फॉर्म कैसे हुआ है एंड हाउ दिस फॉर्मेशन देन विच एनरिच दिस 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर. देखो एरिया भी लिख दिया है, अगर टाइम अलाउज यू यू कैन राइट इट एब्सोल्युटली एज शोन इन मैप. सो सी इंट्रोडक्शन आपका हो गया ऑलमोस्ट 25 to 30 वर्ड्स एंड दैट इज व्हाट द वर्ड सेड लिमिट सेड बाय, ठीक है. तो या एक्सेप्टेबल, नो इश्यूज. Then reach with the various resources used by human being, right? See Deccan Trap map over here. Though I personally feel over in this map, see merely drawing Deccan Trap is not enough. देखो आप being an administrator, आज अभी कल्चर चल क्या रहा है, देखो हाइब्रिड कल्चर. Hybrid culture, it means what? Like say hybrid resource utilization, that is what government of India is planning for. It means what? अगर हम solar plant बनाएंगे तो we are not supposed to create only solar plant. Say alternatively on the same land developed wind energy plant as well. अगर डैम रिजर्वायर बनाया है तो वहां पे सोलर पैनल्स भी आप लगा सकते हो, तो सोलर एनर्जी भी बनेगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बनेगी. आर यू गेटिंग व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज से थिंकिंग फॉर और द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड एज. So the thing is, you are not supposed to use your resource just for one single purpose. Try to be again what efficient in your resource utilization, and map here is a resource. So try करो आप, right? Over here, though I have drawn only one map there, but I personally feel कि इस मैप में और भी आप कुछ रिसोर्स लोकेट कर सकते हो. जैसे कि रिसोर्स लोकेट करना, आयरन कहाँ है, यहाँ पर है, मैग्नीज कहाँ पर, यहाँ पर है, देन अगेन ब्लैक सॉइल कहाँ पर है, ब्लैक सॉइल, क्योंकि आप जो नीचे पॉइंट्स लिखोगे यू कैन जस्ट शो इट ओवर दैट एंड दैट इट गिव्स इवैल्यूएटर एडवांस आइडिया इन एडवांस अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू अप्रोच फॉर. यस, that is what a skill I am telling you, okay. So see natural resource potential of Deccan Trap. Now you can start with the forest or vegetation, because
अगेन दिस रीजन, वो व्हाट आई पर्सनली फील, मिनरल रिसोर्सेज तो है ही है, क्वेश्चन का ओरिएंटेशन तो मिनरल रिसोर्स ज़्यादा है, बट आई पर्सनली फील कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज का भी उतना ही सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इफ़ यू कंसिडर कि इंडिया में 100% फॉरेस्ट जो है, ऑलमोस्ट 58% फॉरेस्ट इज एक्चुअली लाइंग विद द Deccan Trap, sorry, peninsular India, and Deccan Trap is having equally concentration of this forest, and that it makes again forest resource rich. And again if you consider the environmental approach, तो पहले forest vegetation लिखा तो भी that is not absolutely acceptable, or you can start it with the mineral. Okay, I'm just trying to justify why I had written this forest and vegetation there. You can write few examples further. Deciduous type, see वहाँ पे knowledge भी reflect हो गया and points भी at you, and the tribes and wildlife species, see diversity. See, forest and vegetation, it's not merely about biomass, it's as well about the culture, tribe and wildlife, the faunal life over there. So देखो आंसर आई एम टेलिंग यू अगेन कि आंसर में आपकी अंडरस्टैंडिंग भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, कि अगर सिर्फ फॉरेस्ट को अगर आप फॉरेस्ट ही लिखोगे तो evaluator will understand, rather having your a narrow approach. Forest, it is inclusive of tribes, forest it is inclusive of other wildlife species as well. Yes, तो ये आंसर में जब रिफ्लेक्ट होगा तभी वो होलिस्टिक पॉइंट बनेगा, आंसर भी बनेगा, ठीक है. देन मिनरल रिसोर्सेज फॉर्म बाय वोल्केनिक इरप्शन, द रीजन इज रिच इन मैंगनीज, आयरन, bauxite deposits. You will find, see I had drawn the map separate over here. Now it's up to you कि आप उस स्किल को कैसे यूज करेंगे. मैपिंग तो स्किल है आपके पास, अब आपके पास स्किल है कि इसको यूज कैसे करना है फर्दर. ओके, हैविंग अ नॉलेज इज अ डिफरेंट थिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ अ नॉलेज इज अ डिफरेंट थिंग. I assume you guys are pretty much clear कि इसके ये डिफरेंस क्या होता है. ओके, देन एनर्जी resources conventional, you will find due to the say the presence of the rivers and sedimentary rocks has energy resource potential, as recently you will find in KG basin. So here one example you can add petroleum, shale gas resources, coal resources there, right? Whatever those coal resources are, coal bed, methane there, this one. Then black soil is itself a resource, natural resource itself. Basalt rock and black soil. Black soil is the result of erosion weathering, okay, of basalt rock. So black soil, that is the best suitable soil, alternatively known as cotton soil or reguer soil, and that is again a natural potential. देखो आंसर में जब डिवर्सिटी होगी आपके तभी आपको एडिशनल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि हमारी फाइट एवरेज मार्क्स के लिए नहीं है. आई एम टेलिंग यू, हमारी फाइट है वो एडिशनल 1 मार्क जो चाहिए हमको एवरी क्वेश्चन, उसके लिए तो उसके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स चाहिए होंगे that makes, because everyone else is going to write mineral, everyone else is going to write energy, right? You have to have some a different innovative point in addition. Then rock, as you know, the rock is again basalt rock that is used for the road construction and even say the other construction activities. Okay, so ये भी एक resource in itself. See, you will find the next that you can even merge with the conventional energy resources, but I have added it as a separate point just to highlight environmental significance as. So renewable energy resources, you will find that at the spread of area for solar, wind potential, even the coastal margins, you will find having a great potential for geothermal energy, and that it makes, okay, that it makes this peninsular region natural resource rich. Okay, you can add one again dimension over here, that is water resource as well. ठीक है, water resource कर सकते हो if you want add, or you can add many dimensions as well. तो but within a time limit and within that particular structured limit, I feel कि इतने points लिखना भी that is itself enough है. Okay, next conclusion, how you are going to conclude then? Hence the Deccan Trap is a resource rich region. Its potential still remain untapped due to, see the reason, you will find why, even though it is rich in, naturally rich in resources, you have to write कि ये status भी तो बताओ कि अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है. It remain untapped, status बता दिया, reasons as well. See, hilly terrain,
climatic conditions, hard rock topography, etc. पूरा list नहीं देनी है हमको. Try to be again show evaluator कि yes you know the reason but it's just due to the time scarcity and the space limitation that is put by the UPSC itself, right? इतने points लिखे हमने. Okay. Then however nature has offered us inherent potential to solve the problems of the region and effective regional planning can only ensure it. देखो, yes, I feel this conclusion is again giving you the present status, it gives you reasons and it gives you solution for that matter. That is how that answer, okay, that is not a complete answer. You will find कि बहुत और भी additions हो सकते हैं, dimensions में conclusion के ways भी differ हो सकते हैं, introduction के ways भी differ हो सकते हैं. But whatever you will find, say we are just trying to make our answer holistic, multidimensional, and what the best of that particular demand. So I think आपको ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है ज्योग्राफी आंसर राइटिंग, ये आपको इंटरेस्टिंग भी लग रही होगी एंड मोर देन दैट यू विल फाइंड इट्स रियली से efficient for your answer writing. Having any issue, right, just feel free to comment on the video, okay, and if you really like it, so please like it, share it, subscribe to our channel. Thank you guys.